Hello, my dear students of class 6th grade. Welcome you all in your English grammar class. Myself, Manali, I am your digital mentor. From today onwards, I am going to take your English grammar class. I hope you have revised the previous chapter and also I hope you all are fit, fine and healthy and ready to learn. Today, we are going to start our class with chapter number 5, the adjective. Now, let's start the class. Chapter 5, the adjective. Adjective को हम विशेषण भी कहते हैं. Definition. An adjective is defined as the part of speech which is used with the noun or pronoun and adds to its meaning by qualifying it. So what is adjective बच्चों? Adjective is defined as a part of speech. Adjective क्या है? ये part of speech है जो कि noun और pronoun में और meaning add करने के लिए इस्तेमाल होता है and to qualify them. Read and understand the following sentences. So following sentences are given. You have to read these sentences with me. Number 1, the beggar is poor man. Number 2, the Himalayas are high mountains. Number 3, there are 40 rupees in my pocket. Number 4, she is a beautiful girl. Number 5, he drank a little water. So my dear students, here are the sentences given to you which are qualifying noun or pronoun. जैसे कि the beggar is poor man. जो गरीब है, जो भिखारी है, वो क्या है? वो एक poor man है, वो एक गरीब आदमी है. The Himalayas are high mountains. और जो हिमालयाज है वो कैसे mountains है? वो ऊंचे पर्वत हैं. There are 40 rupees in my pocket. So there are what? What in my pocket? मेरे pocket में क्या है? मेरे pocket में 40 rupees है. So these are the words which are adding meaning to noun. So they are known as adjective. So kinds of adjective. Now we are going to study about the kinds of adjective. Adjectives are of the following kinds. Adjective of quality or descriptive adjective. Adjective जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं. अब हम पढ़ते हैं कितने प्रकार के adjective होते हैं. Number 1, adjective of quality और descriptive adjective. ठीक है, अब adjective of हम quality पढ़ेंगे. These adjective denote the quality or condition of a person or a things. So ऐसे adjective क्या define करते हैं? किसी भी इंसान की quality या उसकी कोई भी condition को, किसी भी noun, ठीक है, noun is a person of place, animal or thing, किसी भी जानवर, किसी भी मनुष्य, किसी भी जगह की वो quality और condition के बारे में बताते हैं. जैसे कि a brave soldier. So soldier कैसा है? वो बहादुर है. Golden chain, chain कैसी है? वो सोने की है, etc. The words brave, big and golden are adjective of quality. Now, adjective of quantity or quantitative adjective. Now, we are going to study of quantity, यानी कितनी मात्रा है, किसी भी noun की कितनी मात्रा है. जैसे कि these adjective tell us about the quantity or degree of a thing. For example, much, little, no, none, some, any, all, whole, etc. I have some money. He does not have any money. Milk in the pot is enough. So what we have to keep in mind? The noun which these adjective qualifies are always singular. So ऐसे nouns जिन्हें ये adjective जो है qualify करते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? वो हमेशा singular होते हैं. कौन से वाले? Adjective of quantity or quantitative adjective. Now, adjective of number. Now we are going to study about the adjective of number. These adjectives tell us definite or indefinite number of person or things. A definite adjective of number. These type of adjective tell exact number of a person or a thing. For example, 2 girls, 3 mountains, 4 soldiers. So adjective of number में पहला तो आपका होता है जो exact number आपको बताते हैं, जो counting वाले होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indefinite adjective of number. These types of adjective do not indicate an exact number of a person, a few apples, some money, no house. But इस तरह के adjective जो है वो क्या करते हैं? वो आपको exact number नहीं बताते, बस उसकी क्या बताते हैं? थोड़ा सा indicate करते हैं आपको चीजों के. ये जैसे कि कुछ हैं, few apples हैं, थोड़े पैसे हैं, कोई घर नहीं है, तो इस तरह से. How to know an adjective of number? और adjective of number को आप कैसे जानेंगे? Ask a question to sentence how many.
The answer would be an adjective of number. For example, अगर आप खुद से सवाल पूछेंगे कि how many, कितने, तब आपको adjective of number के बारे में पता चल जाएगा. There are fewer people in the hall than I saw. इस hall में कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं जितना मैंने देखा था. How many person? कितने person? Fewer. The word fewer is an adjective of number. Now, difference between adjective of quantity and adjective of number, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं हमें मात्रा बता रहा है, दोनों ने कहीं ना कहीं हमें एक नंबर बता रहे हैं कि कोई भी चीज कितनी है, कोई भी नाउन कितना है. अब इसमें डिफरेंस क्या होता है हम पढ़ते हैं. Adjective of quantity answer the question how much. तो जो क्वांटिटी होती है वो आंसर क्वेश्चन करती है how much. जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्वेश्चन करते हैं वो how many. ठीक है, नंबर जो है वो कितने हैं और क्वांटिटी वो है वो कितनी क्वांटिटी है. ठीक है. Now demonstrative adjective. These adjectives point out which or what person or things meant. For example, this, that, these, those, are, and the, such, etc. Interrogative adjective. These type of adjective are used to ask question. For example, which, what, whose, etc. Number 1. Which way should we take? Whose pen is it? Fifth one. Possessive adjective. These type of adjective are used to tell possession of something or some person. For example, my, your, his, her, our, your, their, its, etc. Distributive adjective. These adjectives shows that the things are taken separately or in separate lots. For example, each, every, either, or neither. So these are the examples of distributive adjectives. Emphatic adjective. These adjectives are used to emphasize a positive adjective. For example, own and very. I saw the flight with my own eyes. This is the very best house in which I live. So my dear students, अब हम देखेंगे कि noun से adjective का formation कैसे होता है और आपको मेरे साथ ये sentence जो है वो repeat करने होंगे. Adventure, adventurous, wisdom, wise, capability, capable, wit, wide, silk, silken, pardon, pardonable, virtue, virtuous, man, manly, brave, brave, prudence, prudent, creation, creative, hope, hopeful, attention, attentive, appreciation, appreciable, satisfaction, satisfactory, gold, golden, silver, silvery, dirt, dirty, courage, courageous, fool, foolish, comedy, comic, attraction, attractive, length, long, sense, sensible, to act, active, to apply, applicable, to love, lovable, to talk, talkative, to relay, reliable, to sell, sellable, to seize, seizeless, to beauty, to beautiful, to depend, dependable, to agree, agreeable, to quarrel, quarrelsome, to tire, tireless, tiresome, to care, careless, and careful. My dear students, you have to repeat these with me. Sick, sickly, economic, economical, tragic, tragical, to someone, single, white, whitish. Okay, my dear students, I hope अब आपको पता चल गया होगा कि noun को adjective से कैसे change करते हैं और adjective को adjective में और उसको कैसे truly change करते हैं. तो here some examples are given to you. The adjective, its uses. Now we are going to study about the uses of adjective. Generally, adjective are placed before the noun they qualify. For example, ज्यादातर आमतौर पे एडजेक्टिव वो है जो नाउन के पहले लिखा जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड जितने भी वर्ड आपके हैं सेंटेंस में वो आपके एडजेक्टिव हैं और वो किसके पहले लिखे गए हैं? नाउन के. क्योंकि बॉय जो है वो आपका नाउन है, स्टूडेंट आपका नाउन है, सुधाकर भी आपका नाउन है, राहुल भी आपका नाउन है, कार भी आपका नाउन है और अ पीस ऑफ आर्ट भी आपका नाउन है. तो ये जितने भी एडजेक्टिव वो नाउन के पहले आए हैं. एक्सेप्शन, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है. This rule does not apply under the following circumstances: when more than one adjective is being used. For example, God helps all people, strong or weak. भगवान जो है वो सबकी मदद करते हैं, strong हो चाहे weak हो. तो इसमें आपका noun से नहीं, noun के बाद लगा है. When an adjective has been used as a title, for example, Ashoka the Great was
काइंड एंड ब्रेव। तो अब इसमें नाउन के पहले नहीं लगा, बाद में लगा है काइंड एंड ब्रेव, जब हम किसी के टाइटल के बारे में बोलते हैं। When an adjective has more to do with the verb than the noun, for example, we painted all window blue. हमने सारी खिड़कियां कैसे पेंट कर दी है? ब्लू कलर की पेंट कर दी है। तो ये सारे आपके एक्सेप्शन केस है, you must have remember that. Okay, my dear student, it's question time. Rewrite the following sentences and illustrate. My dear students, here nothing is given to illustrate. Here, my dear student, nothing has been illustrated. You, आपको ये sentence में क्या करना है? तो what you have to do, what you can do, you can just write, find out the adjective in the following sentence. Adjectives. So you are going to find out the adjective in the given sentences. He talks much. So what will be the adjective? Much. So second one, everybody relies on him. Everybody. The law applies here. So you have to mark out the adjective in the given sentences. Rest you have to do it with your own. Now we are going to read about the degree of comparison. Here, my dear students, degree of comparison is given to you. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम कोई स्टेटमेंट नॉर्मल पास करते हैं, जैसे रीता इज अ गुड स्टूडेंट, रीता जो है वो अच्छी लड़की है, देन दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव डिग्री। अगर हम कहते हैं कि रीता इज बेटर देन सीता, तब क्या हो जा रहा है? यहाँ कंपैरिजन हो जा रहा है दो लोगों का, तो हम इसको कहते हैं कंपैरेटिव। और जहां रीता इज द बेस्ट इज, रीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट, यहाँ क्या हो जा रहा है? यहाँ उसको हम एकदम सुपरलेटिव क्वालिटी दे रहे हैं, तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। आइए पढ़ते हैं। द पॉजिटिव डिग्री इंडिकेट्स द सिंपल क्वालिटी ऑफ समथिंग और सम पर्सन विदाउट इट्स कंपैरिजन विद अनदर थिंग और पर्सन हैविंग द सेम क्वालिटी। नाउ कंपैरिजन यानी कंपैरेटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री शोज अ हायर डिग्री of the quality after it has been compared to another thing having similar quality. Comparative is made by the use of then. Okay, comparative degree में हम हमेशा then का use करते हैं. Then superlative degree, the superlative degree denotes the highest degree of the quality of a person or a thing. Now study the following sentence. So here, my dear students, you have to repeat the sentence along with me. Sohan's house is beautiful. सोहन का घर सुंदर है, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है. सुरेश हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन सोहन, यानी कि जो सुरेश का घर है वो सोहन के घर से भी ज्यादा सुंदर है, तो यहाँ आपका कंपैरिजन हो रहा है. राहुल्स हाउस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल, राहुल का घर तो सोहन और सुरेश से भी ज्यादा सुंदर है, तो यहाँ आपका सुपरलेटिव डिग्री आपका हो जाएगा. इसी तरह से दूसरा आपका सेंटेंस दिया गया है. Tinny is fat, Minnie is fatter than Tinny, Ria is the fattest of my friend. Now third one, the Nilgiri mountains are high mountains. The Alps are higher than Nilgiris. The Mount Everest is the highest of all mountains. So what we have to do, we have to keep in mind the superlative degree of an adjective article, the before it. So superlative degree adjective takes article the before it. Now formation of comparative and superlative degree. Now we are going to study कि हम कोई भी positive degree को कैसे comparative और superlative degree में convert करते हैं. My dear students, comparative में हम हमेशा then का use करते हैं और superlative में ज्यादातर हमेशा da का use करते हैं. Now let's start. Most of the adjective form their comparative degree by adding er and superlative degree by adding est. So, बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव्स होते हैं जिसमें हम er लगा देते हैं तो वो कंपैरेटिव हो जाते हैं, और est लगा देते हैं तो वो सुपरलेटिव हो जाते हैं. आइए एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं. बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट. ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट. काम, कामर, कामेस्ट. डीप, डीपर, डीपेस्ट. डल, डलर, डलेस्ट. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. गे, गेयर, गेएस्ट. Kind, kinder, kindest. Light, lighter, lightest. Proud, prouder, proudest. Quick, quicker, quickest. Small, smaller, smallest. Sweet, sweeter, sweetest. Tall, taller, tallest. Young, younger, youngest. Now, second one. When the positive degree ends in e, repeat, the comparative degree is formed by adding r and the superlative degree is formed by adding st.
पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, जब कोई भी पॉजिटिव डिग्री ई से एंड होती है तो हम आर लगा के उसको कंपैरेटिव कन्वर्ट कर देते हैं और एस टी लगा के हम सुपरलेटिव एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। और आपको ये एग्जाम्पल्स मेरे साथ रिपीट करने हैं। एबल, abler, ablest, brave, braver, bravest, dense, denser, densest, fine, finer, finest, gentle, gentler, gentlest, humble, humbler, humblest, large, larger, largest, nice, nicer, nicest, safe, safer, safest, severe, severer, severest, white, whiter, whitest, wise, wiser, wisest. Now, when the positive degree ends in y, preceded by a consonant y is changed into I before adding er and est. Now, अगर पॉजिटिव डिग्री जो है वो y से आपकी एंड हो रही है तो हम y को हटा के क्या कर देते हैं, हम IER कंपैरेटिव में यूज कर देते हैं और EST हम यूज कर देते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। आइए एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते हैं और आपको मेरे साथ ये एग्जाम्पल्स रिवाइज करने हैं। बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, इजी, easier, easiest, happy, happier, happiest. Rest of the words you have to read it by your own. Some of the positive degree are transformed into the comparative and superlative degree by doubling the last letter. तो कुछ positive degree को जब हमें comparative और superlative degree में change करना होता है तो हम last के alphabet को double करके उसमें ER और EST add कर देते हैं, जैसे कि big, bigger, biggest, fat, fatter, fattest, hot, hotter, hottest, sad, sadder, saddest, thin, thinner, thinnest. Now, a few positive degree are transformed into the comparative and superlative degree by adding more and most respectfully. बच्चों, कुछ पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए हम पॉजिटिव में मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए हम पॉजिटिव में मोस्ट लगा देते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, brilliant, more brilliant, most brilliant, bitter, more bitter, most bitter, carefree, more carefree, most carefree, dangerous, more dangerous, most dangerous, difficult, more difficult, most difficult, doubtful, more doubtful, most doubtful, interesting, more interesting, more interesting, learn, more learn, most learn, secure, more secure, most secure, splendid, more splendid, more splendid, wonderful, more wonderful and most wonderful. Now, in the case of some adjective, comparative and superlative degree are formed in irregular way. लेकिन कुछ केसेस में हम कुछ ऐड नहीं करते हैं, वो एकदम ही इरेगुलर वे में फॉर्म हो जाती है, जैसे कि बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फादर, farthest, further, furthest, for, former, foremost, fast, good, better, best, in, inner, innermost, late, later, latest, later, last, little, less, least, many, more, most, much, more, most, old, older, oldest, elder, eldest, out, adverb, outer, utter, uttermost, uttermost, utmost, up, adverb, upper, uppermost, upmost. So now what we have to keep in our mind, the comparative degree of an adjective are used when comparing two person things and not otherwise. So जब comparison होगा तभी comparative degree का इस्तेमाल होगा, जैसे कि the flower of this garden are more beautiful. तो हम यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो हम मोर ब्यूटीफुल का नहीं यूज कर सकते, हमें बस नॉर्मल लिखना है द फ्लावर ऑफ गार्डन आर वेरी ब्यूटीफुल, द फ्लावर ऑफ दिस गार्डन आर मोर ब्यूटीफुल देन दोज ऑफ दैट गार्डन. सो मोर एंड देन का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब हम दो चीज का कंपैरिजन कर रहे होंगे. Some adjectives appear to be comparative but they are used in positive degree. कुछ adjective ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि वो comparative है, वो comparison कर रहे हैं, लेकिन वो positive degree में use होते हैं. For example,
upper, lower, inner, outer, elder, former, later, major, minor, etc. He has a son by his former wife. I live in the upper story of the house. Now, some comparative degree take to instead of then. तो कुछ comparative degree जो है कि वो then नहीं use करते, उसमें हम to का use करते हैं. जैसे you are senior than me in service, ये आपका incorrect हो जाएगा. You are senior to me in service, ये आपका correct हो जाएगा. When the word comparatively is used, the degree of adjective in the sentence should be positive. ठीक है, जो पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए तभी पॉजिटिव से कंपैरेटिव होगा, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव नहीं हो जाएगा. जैसे स्नेहा इज कंपैरेटिवली पुअरर इन इंग्लिश, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. स्नेहा इज कंपैरेटिवली पुअर इन इंग्लिश. तो पॉजिटिव से ही हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे. अगर कोई चीज कंपैरेटिव में है तो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट. Some, any, the word some, any are used to indicate quantity, but some is used in affirmative sentence while any is used in negative or interrogative sentence. Some और any दोनों ही quantity को indicate करने के लिए लिखते हैं, लेकिन some हमेशा positive में रहता है और any हमेशा negative और interrogative में रहता है. जैसे कि there are any boy in the class, तो ये negative में है तो हम ये any नहीं use कर सकते. There are some boys in the class. There is not some water in the pot. No, there is not any water in the pot. Have you deposited some money in the bank? No, have you deposited any money in the bank? Now, each and every, the meanings of the word each and every are same, but they are used differently. The word every is used more than two person or things where the number is indefinite. So, every कहाँ use होता है जहाँ number indefinite हो, और ईच वहां होता है जहां नंबर डेफिनेट हो. जैसे कि इनकरेक्ट आपका होगा एवरी वन ऑफ टू फ्रेंड्स इज इंटेलिजेंट. ईच वन ऑफ टू फ्रेंड इज इंटेलिजेंट नहीं होगा, क्योंकि ईच आपका डेफिनेट में लगता है और एवरी आपका इनडेफिनेट में. ईच सिटीजन एक्सरसाइज हिज राइट वोट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा एवरी सिटीजन, क्योंकि यहाँ हमें डेफिनेट नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ एवरी का यूज करेंगे. Little, a little, the little. The adjective little means hardly anything. It has a negative meaning. जो the little होता है वो negative meaning आपको show करता है. There is a little hope of victory. There was a little water in the pot. The adjective a little suggests some but not much. It has positive meaning. A little की positive meaning होती है. A little knowledge is a dangerous thing. He knows a little of everything. The adjective the little also indicates some quantity but suggests whatever quantity there is. Okay, that example are, I have drunk the little milk there was in pot. I have spent the little money I had. Now, few, a few, the few. The use of these adjectives is similar to that of little, a little, the little. The only difference being is that few, a few, and the few stand for number, while little, a little, and the little stand for quantity. Now, few means hardly or any, almost. It is a negative meaning. Few मतलब negative आपका sentence जाता है. Few students attend in the school. Few people live here. A few means some but not many. It has positive meaning. For example, we are going for a few days. Our students attend in school every day. The few means some but all there are. For example, I have spent the few rupees I had. The few poems that he wrote are very popular. Now, my dear students, take out your pencil. We are going to solve few exercises together. I hope you have understood the concept of adjective. And जो भी चीजें आपको इसमें मैंने पढ़ाई हैं, आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आप जब भी कोई सेंटेंस फ्रेम करो या कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करो तो आपको ये सारी चीजें याद हो. Now, here I am going to solve two of them. Another you have to solve it by your own. Large, larger, largest, dense, denser, densest. Underline the adjective in the following sentence and write their kind. So what you have to do, you have to underline the adjective and you have to write it count. The cow is a domestic. So domestic will be the adjective of quality. Savita is a beautiful girl. It will also be an adjective of quality. Rest sentence you have to solve it by your own. Now, fill in the blanks with suitable degree of adjective as given in the bracket. So here my dear students, ये bracket में आपको जो है वो कुछ आपको डिग्रीज दी गई हैं जो आपको fill in the blanks में
सही है जो appropriate है वो fill करनी है. Mount Everest is the greatest peak of the Himalayas. She is dash girl in the class. She is the ugliest girl in the class. Rest you have to solve it by your own. Rewrite the following sentence using comparative degree and superlative degree. My dear students, आपको ये sentence comparative degree और superlative degree में लिखने हैं. जैसे कि पहला example आपको solve करके दिया गया है. Sonali is a beautiful girl. Sonali is more beautiful girl than Mansi. Sonali is the most beautiful girl in our class. So like this, you have to solve another statements as well. My dear students, I hope now the concept of adjective and its degree is clear to you. We are going to see you in your next English grammar class. Till then, keep revising, keep learning, and keep take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.